Hello. Yes, I Uh, can hear you. for bar chart for next planning deadline. Okay. Great. So I'm going to share you my screen. Now, please confirm me. Can you see my screen? Yes. Okay. So basically, Primavera or Microsoft project I use for project planning and project management. What is the project? And you all are know what is the project. Basically, project planning is to identify the schedule, to plan your schedule, and to calculate the total budgeted cost. That means I wanted to uh, let me confirm that are you comfortable with इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बात करें Okay. Sir. इन बोथ Yes. ओके ठीक है कंबाइंड श्योर हम दोनों में ही डिस्कस करेंगे सो बेसिकली प्राइमावेरा और एमएस प्रोजेक्ट में हम प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं और प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं और आफ्टर द प्लानिंग वी हैव टू असाइन द बेसलाइन इज लाइक अ लाइन between project planning and project management. So Primavera is the software of Oracle and Microsoft is known as Microsoft Project. तो ये Microsoft कंपनी का है. प्राइमावेरा और माइक्रोसॉफ्ट में एक बड़ा डिफरेंस ये आपको देखने को मिलता है कि प्राइमावेरा में आपको कुछ भी सेव नहीं करना होता है. आई एम गोइंग टू शो यू सॉफ्टवेयर ऑफ प्राइमावेरा जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. यू कैन सी हियर this is the software of Primavera. You can see here this is your total project, and in project you can see that we can find out the total budgeted cost of your project, or you can see here a kind of sample I'm going to show you, the G+5 building project. Or if you want to see the more projects, here we have a number of projects in the software. This is basically your software. In this software you can see the ample of projects. और let's say कि ये जो है सिटी सेंटर का एक हमारे पास में प्रोजेक्ट है. आई एम गोइंग टू ओपन इट. एंड हम प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम क्या लर्न करते हैं. फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट WBS. दैट मीन्स वी नीड टू कैटेगराइज देम into some features like this. So this is your WBS. You can see here WBS is called work breakdown structure, where you can break down your total project. यूरोप जो में जो आपको लोग यहाँ रहते पर हैं ये जिनको हम ग्रीन बहुत से ही आपको अमीर शो कर रहे मानते हैं, हैं दैट इज वो योर लोग वर्क आज की डेट ब्रेकडाउन. में दैट मीन्स कि डिजाइन और इंजीनियरिंग वर्क है, देन फाउंडेशन वर्क है, फिर स्ट्रक्चर वर्क है. एंड आफ्टर दैट इनसाइड ऑफ दीज WBS यू कैन सी दैट these are your actual activities which has some duration. इनका कुछ duration भी होगा. So you need to understand the duration of your task. Then you need to understand the what is the start date of your task, what is the finish date of your task, and what are the relation between amongst these activities. So we will find out the relations among the activities. Then we will list out the total number of resources involved in this project. The manpower, how many manpowers are required, how many materials are required, how many machineries are required, what are the quantities of materials which is required, what is the rate of the material. So that things we need to identify, we need to list out, and we will assign them into our task. So in that way, we can easily find out the total budgeted cost. That means that is the planned cost of my project. Once you received, जब आपको पता चल जाता है कि what is the duration of your project and what is the total cost of your project, then the actual execution start, and that execution is called project management. Before execution, जब आपको पता चल चुका है कि what is your total duration of your project and what is the total cost of your project,
then this portion is called project planning, because we are only planning on that portion. After that a baseline लगाते हैं. Baseline is basically a snapshot kind of thing, a line. वो बाइफरकेट करती है प्रोजेक्ट को प्लान और प्रोजेक्ट को मैनेज करने से. सो विद द हेल्प ऑफ बेसलाइन यू कैन इजीली कंपेयर कि हमने प्रोजेक्ट से पहले क्या हमारा प्लान था और आफ्टर द एग्जीक्यूशन व्हाट इज द सिनेरियो राइट नाउ. सो हियर यू कैन सी द एक्चुअल टोटल कॉस्ट जो एक्चुअल वर्क डन हुआ है उसको हमने अपडेट किया है. आफ्टर अपडेशन यू कैन सी हियर द एक्चुअल टोटल कॉस्ट. So this is the way to identify your projects. So again, my question is for you. Are you looking for the job change? If you are looking for a job change, then this session is for you. Primavera is for you. Or let's say ki if you are fed up with your side job, or if you are looking for extra income, or if you are looking for a knowledge kind of thing, so this session is for you. So you know that Primavera is a very powerful tool in terms of project planning, scheduling, and controlling. Planning is basically to identify your total duration of your project. Planning is to identify the total cost of your project. And scheduling is basically to schedule your project. That means किस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी हमको करनी है, कौन सा काम हमको करना है, that you need to understand in scheduling. After that, once the execution has been started, you can control your project. So if may ask you कि what is the success criteria of any project? If you want to say that कि sir ये that project was successful, so how you will calculate them कि in on the what ground you can say that कि this project is successful, on what ground? किस बेस पर आप बोल सकते हो कि सर हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा? एनीवन? सर टाइम ड्यूरेशन के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया. अगर प्रोजेक्ट टाइम सर्टेन टाइम के अंदर कंप्लीट हो गया है तो. और क्या हो सकता है? Sir, within the cost also. विद इन द कॉस्ट. ग्रेट. और सर और क्या हो सकता है? क्वालिटी के और क्या? साथ में, यस, क्वालिटी के साथ में सर. yes, yes, definitely. So these are the success criteria of your projects: delivered on time, delivered within the budget, or meet the requirement. And what are the requirement? Requirement was must be in with the quality वर्क हो, उसके साथ अगर ये मीट कर रहा है, टाइम पर डिलीवर हुआ है, कॉस्ट हमारी विद इन बजट है, then this project is successful. If you have, let's say you have a number of activities, you have thousands of activities. एक प्रोजेक्ट है जो 3 साल का 4 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज है, तो इट विल बी वेरी टीडियस फॉर यू टू टू कंट्रोल योर प्रोजेक्ट. हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? 4 साल का प्रोजेक्ट है, 1 साल हुआ है. अब 1 साल में आपको कैसे, हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि आर वी गोइंग राइट ऑन राइट ट्रैक और नॉट? अभी तक जो बजट आ चुका है, अभी कितना पैसा खर्च हो चुका है, कितना पैसा आया है, अभी जो पैसा खर्च हुआ है उस बेसिस पर हमने कितना ट्रैक किया था, व्हाट वाज आवर प्लान कॉस्ट till now, and what is the actual cost, what is the difference between them, what are the parameters on the basis of on what ground we can say that ki abhi hum we are on the right track. So for that we have a beautiful tool which is Primavera, and also we have the one tool which is Microsoft Projects. Both tool are very good. If you ask me कि सर दोनों में कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है या कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, सो आई वुड सजेस्ट यू प्राइमेवेरा. But if you are looking for a small project, or if you are looking for a only on scheduling part, then MS Project is for you. But if you are looking for a huge project, and if you want to work on a number of project on the same time, अगर आप एक ही टाइम पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ में डील करना चाहते हो, so then Primavera is for you. And if you are working on a small company, and if you're working on a single project at a time,
then Prime MS project is for you. MS project is basically a kind of project where you can see that. अभी मैं आपको show करके दिखाता हूँ. I'm going to show you the software MS project, और उसमें कुछ projects मैं आपको show करता हूँ. So you can also compare as per your schedule. See, here you can see that it looks like you're working on Excel, but it has some tool. Yes, of course, it is a great tool for project planning, for scheduling. इसमें आप resources, उनका identity, resources, उनका calculation, the cost, that part you can easily control. But if you are looking for a big project, because here you can see that here you have one option which is called enterprise project structure. Enterprise project structure is basically the enterprise. That means you need to create a company. You can create company. आपको यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर सकते हो इन प्राइमावेरा, बट इन एमएसपी यू कैन नॉट क्रिएट कंपनी, यू कैन जस्ट क्रिएट द प्रोजेक्ट. आपको सिर्फ यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, यू कैन नॉट क्रिएट अ कंपनी. You have the number of tools like task. We have the task option, we have resource option. Resource are basically the manpower required in the project, the material required in the project, or machinery is required in the project, after or else manpower, material, machineries. What is the difference between company and project? Company is basically a company, और project एक project है. कंपनी के अंदर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं ना. लेट्स से कि माय कंपनी इज XYZ, या माय नेम इज संजय अग्रवाल, तो संजय प्राइवेट लिमिटेड. अब संजय प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. सो अगर वो 10 प्रोजेक्ट को एक साथ पैरेलली आपको मैनेज करना है, सो यू हैव प्राइमावेरा. अगर आपको वन बाय वन प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, सो MSP. But both have a different, both come with a different experience. आप जब MSP को यूज करते हो तो आपको MSP में ज्यादा अच्छा लगने लगता है, मगर जब प्राइमावेरा यूज करते हो तो प्राइमावेरा आपका हैंड्स ऑन अच्छा हो जाता है. But if you are looking for management part, if you are you are very much interested for management only, that means execution part, तो फिर आपको प्राइमावेरा करना चाहिए. And if you are looking for a scheduling part, the planning part, तो उस केस में एमएसपी इज इंक्लिनेशन एमएसपी का थोड़ा ज्यादा है. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट. सी हाउ टू हैंडल ए प्रोजेक्ट. सो फॉर हैंडलिंग अ प्रोजेक्ट यू नीड टू प्लान योर एक्टिविटीज. एक्टिविटीज और प्लान. एक्टिविटीज की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि व्हाट आर द एक्टिविटीज, व्हाट आर द प्लान, सो एक्टिविटीज आर बेसिकली दीज वर्क, है ना. ऑफिस सेटअप, review your technical dates, review on approved design, design addition, site preparation, excavation, foundation, everything. These are your activities. और इसी को हम टास्क भी कहते हैं. एंड आफ्टर द प्लानिंग योर एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई द ड्यूरेशन, की कौन सी एक्टिविटी कितना ड्यूरेशन लेगा. एंड व्हाट आर द रिलेशन. रिलेशन इज बेसिकली, रिलेशन इज असाइनिंग देम, कि एक एक्टिविटी के बाद हमको कौन सी एक्टिविटी करनी है. दोनों एक्टिविटी हमको पैरेलल करनी है. कोई एक्टिविटी हो सकता है हमको पैरेलली स्टार्ट कर दी है, कोई एक्टिविटी एक एक्टिविटी की कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट कर दी हो. सो दीज रिलेशंस यू नीड टू फाइंड आउट. And then resources and cost management. You need to identify the resource, manpower, material, machineries, and their cost. And after that, other expenses, office setup cost, your traveling cost, any fixed cost, stationary cost, your electricity cost, water supply cost. Then we need to identify the risk assessment. What are the risks involved in your project? What are the issues involved in your project? What are the threshold involved in your project? थ्रेशोल्ड क्या होता है इसको हम लेटर ऑन जब आप क्लास में होंगे तो वी विल डिस्कस इन डिटेल. And the documents, what kind of documents required in the project, and you can attach them. Or you can see here the tracking part. Tracking is basically
to track your project. Tracking is a management part where you can track your project, you can identify the project health, where you can identify where are you going on the right track or not. जो हमारा प्लान था उसके हिसाब से हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे. So that thing you can easily identify with the help of tracking. Again, you might have heard the EVM, earned value management, the critical path method, CPM. What are the critical path of your project? What are the earned value management of your project? You can easily crack it with these softwares. Again, you have some milestones, you have the reporting part. You can easily find out the reports. सपोज कीजिए कि मुझे सिर्फ सारी एक्टिविटीज की ड्यूरेशन की एक रिपोर्ट चाहिए, या सभी एक्टिविटीज का मुझे एक कॉस्ट का एनालिसिस करना है, या हर एक्टिविटीज का मुझको एक रिसोर्सेस की एक लिस्ट चाहिए, द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस. So in that case, you can easily calculate, or you can easily create with the help of report tool. And here the comparison is basically to compare after your project has been completed, execution part complete हो गया. Now you want to compare कि हमने प्लान क्या किया था, हमने एग्जीक्यूट क्या किया हुआ है, उसके बीच में कंपैरिजन करना है आपको. एस कर्व के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं. एस कर्व इज बेसिकली द कंपैरिजन graphical representation of your project health. At any point of time you can calculate your project. Let's see, मैं आपसे एक एक रफ आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा. So this is your project, and in x axis this is your, you can see here, this is the time and this is your cost, right? And this curve I have shown you, I'm drawing for you. This is your planned curve, right? That means मैंने आपको कहा कि जब हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट को, सो here you can see that कि प्रोजेक्ट में टाइमिंग सबसे कम है, कॉस्ट सबसे कम है. वंस द प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्ट, कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, राइट? एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कॉस्ट स्लो हो जाएगी और हमारा कॉस्ट रुक जाएगा, और उस टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. So that was the planned process, right? Now I'm going to show you, I'm going to draw one executed curve, right? I'm going to show you one executed curve. This was the actual curve. Now, please anyone tell me, what is your findings? The project timeline has been increased. Project Cost, timeline or cost also increases. cost also increases. Apart from cost increase, timeline increase, और आपको क्या देखने को मिल रहा है? Is any other part which you can see or explain? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनिशियल में ही प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत हाई गया था, ये डिफरेंस है. बट हेयर हमने यहाँ पर कहीं पे कॉस्ट को मीट भी किया था, मतलब यहाँ पर हमारा जो ट्रैक था, वी वर ऑन ट्रैक देयर. वापस से हमने थोड़ा सा अंडर बजट भी करने की कोशिश की, बट इसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ से एकदम से शूट हुआ है हमारा कॉस्ट. सो व्हाट वाज द इशू ऑन दैट पर्टिकुलर फेज कि एकदम कॉस्ट जो है वो शूट हुआ है. So this is basically the graphical representation of your project. Those you can plot in your software as well. So, or you can say that here I'm going to show you one more thing. So after the comparison, basically S curve जो होता है वो comparison के लिए use होता है. What was the planned and what was the your executed one. और उनके बीच में आपके what are your findings, what are the comparison. There are lots of many more things which you can learn in our session, because हम यहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, और एक एक टर्म्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं. और
Again, you can see here why Primavera or MSP is important to help in a detailed scheduling. Efficient resource management आप इसमें कर सकते हो कि इसका हमने सपोज कीजिए कि एक प्रोजेक्ट एक इंजीनियर है, किसी कॉस्ट आपने एक टास्क में उसको लिया हुआ है। लेट्स से कि आपने उस टास्क को, दैट टास्क इज फॉर 5 डेज, 5 डेज का एक टास्क है और 5 डेज में आप उसको 10 आवर्स पर डे यूज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग 50 आवर्स ऑफ इंजीनियर। सो लेट्स से कि आपने 50 आवर्स की जगह पर उसको 52 आवर्स उसका यूज किया है। So on the basis of 52 hours, the amount or cost will be calculated. So efficiently you can manage your resources. You can easily find out कि हमने 50 hours का हमारा उसका calculated man hours था, जिसको हमने 52 hours हमने use किया है. So somewhere I have to maintain है। these, manage these 2 hours. नहीं नहीं हमारे दिन और please mute कर लेंगे तो नीचे बैठ पूरा I would appreciate if you mute Mr. Mohan Rao. Thank you. Mr. Mohan, please mute कीजिए। थैंक यू। कॉस्ट और बजट को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन इजीली रिड्यूस योर रिस्क। यू कैन फाइंड आउट द डिले एनालिसिस। वी विल कैलकुलेट एंड वी विल एनालाइज द डिले। एनहांस द टीम कोलैबोरेशन। So for that, you can break down into the large number of, you can easily break down your project, right? If your project is very large, so you can break it down with a manageable task, assign the deficiencies, you can easily sequence, you can sequencing the activities, आप इस activities को sequence कर पाते हो, किसके बाद कौन सी होगी, रिलेशन लगा सकते हो, शेड्यूल आप कर सकते हो, राइट? प्रोवाइड द क्लियर टाइमलाइन फॉर एग्जीक्यूशन। आपको एक एग्जैक्ट और क्लियर टाइमलाइन आपके प्रोजेक्ट का आप आइडेंटिफाई कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ दी सॉफ्टवेयर्स। बताओ सी क्यों रहा था एलोकेट खत्म हो गया वो मम ना फोन एलोकेट द मैन पावर, मटेरियल, मशीनरीज। आप एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो इसमें। आप बजट को, जो ओवर बजट हो रहा है, ओवर रन हो रहा है आपका प्रोजेक्ट, उसको आप ट्रैक कर पाते हो इसमें। So these are basically your tracking part in terms of cost, tracking part in terms of cost, in terms of time, in terms of your issues, in terms of overrun, in terms of over time, you can calculate it. So what is the conclusion basically? The conclusion is Primavera or MS project is essential for your project execution. It helps to optimize your schedule, cost or resources. Or you can say that improve the success rate of your civil project. So with the help of these softwares, you can easily say that ki, sir, we are on the right time, we are on the budget, or if you are on not on right time, तो आप उसमें कितना आपको what is your cost performance index, what is your schedule performance index, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। See, there are different type of KPIs, key performance indicators. On the basis of these indicators, you can say that कि हमारा what is your project is going, आपकी project की health क्या है, आप अंडर बजट हो, ओवर बजट हो, बिहाइंड शेड्यूल हो, these things you can easily find out or calculate. So those who were joined the class late, so if those have any doubt or wants to ask anything, you can ask. Yes, BIM में यूज होता है ना, because BIM is the collaboration of the collaboration of Rabbit or Primavera. बिम इज बेसिकली बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अब बिल्डिंग में आपको कॉस्ट का भी तो इंफॉर्मेशन है उसमें। कॉस्ट है, शेड्यूल है, प्रोसेस है। सर बेसिकली और मुझे ये भी पूछना था कि हम ये एसोसिएशन में यूज करते हैं क्या, जैसे कि जनरली जब रेविट में हम कर रहे होते हैं बिल्ड,
मतलब मॉडल कर हाँ। रहे होते हैं, तो तभी हम्म। साइमल्टेनियसली प्राइमावेरा में वो ऑटोमेटिक अपडेट्स होते हैं नहीं, या फिर हम ऑटोमेटिक मैन्युअली? अपडेट नहीं होते, वो आपको करने होंगे। अपडेट्स तो आपको करने होंगे। जैसे जब जब आप रैबिट में प्लान करते हो, तो रैबिट में आप उसका आर्किटेक्चर पार्ट डिजाइन करते हो, या एचवीएसी और एमईपी हाँ। पार्ट डिजाइन करते हो। तो यस। एचवीसी और एमईपी पार्ट डिजाइन करने के बाद में फिर आपको वहां पर ये देखना होता है कि जब एक्चुअली आप एचवीएसी करेंगे तो उसका ड्यूरेशन कितना होगा, ओके। और उसका जो कॉस्ट कितना होगा, वो आपको ड्यूरेशन एंड कॉस्टिंग आपको प्राइमवेरा में या एमएसपी में इन्वॉल्व करनी होती है। ओके। एचवीएसी आप लगा रहे हो तो वो उसका क्या होगा, इस तरह से। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ। दिस इज माई प्रोजेक्ट ऑफ G+12। और इस G+12 के प्रोजेक्ट में आप यहाँ पर देखेंगे, सी दिस पार्ट, दिस येलो वन, these आर योर ब्रेकडाउन ऑफ योर प्रोजेक्ट, राइट। एंड इन दिस ब्रेकडाउन आप यहाँ पे देखिए, हमने एचवीएसी इंस्टॉलेशन के लिए 60 डेज दिए। सो एट द टाइम ऑफ डिजाइन एंड आर्किटेक्चर ड्राइंग, वो आपको यहाँ पर देना है कि आर्किटेक्चर और डिजाइन वर्क में कितना टाइम आया, प्रिक्योरमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा। बट वंस ये डिजाइन के लिए है, और फिर यहाँ पर जो आपने एचवीएसी एमईपी डिजाइन किया है उसका ड्यूरेशन आपने यहाँ पर दिया है, इसका कॉस्ट भी आपको यहाँ पर देना होगा। सो दिस इज अ ओके। काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। और इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज आपको लगेंगे, उनका कॉस्ट क्या होगा, एंड देन ट्रैकिंग पार्ट विल कम्स इनटू द पिक्चर। ओके सर, एंड प्राइमावेरा या उसके अलावा भी और कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं क्या, मतलब मैनेजमेंट, बीआईएम मैनेजमेंट करने के लिए भी इसके अलावा और कोई सॉफ्टवेयर है क्या? बिम के लिए बेसिकली ज्यादातर जैसे रेविट हम यूज करते हैं, सिमिलरली प्राइमावेरा ज्यादा यूज होता है। बट इफ यू ओके। आर स्ट्रिक्टली कि हमको सर एमएस प्रोजेक्ट ही करना है, तो यू कैन यूज एमएस प्रोजेक्ट ऑल्सो। बट प्राइमावेरा में आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि यू कैन कनेक्ट विद द क्लाउड, ओके। बिकॉज प्राइमावेरा इज द सॉफ्टवेयर ऑफ ओरेकल, और ओरेकल इज अ क्लाउड बेस्ड कंपनी। तो वो वहां पर आपको कुछ भी सेव नहीं करना होता है। जैसे यहाँ पर आप, अगर ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट को आपको सेव नहीं करना, जस्ट आपको कट करना है, ये कट हो जाएगा। और जब आप ओपन करोगे तो वहीं से ओपन होगा। बट एमएस ओके। प्रोजेक्ट में आपको सेव करना होता है, आपके डेस्कटॉप में, आपकी मेमोरी में वो सेव होता है। पर ओके। प्राइमावेरा क्लाउड पे जाके सेव होता है, सर्वर पर। ओके। ओके सर, एंड एक इसका बेसिकली सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग और ये दोनों सॉफ्टवेयर्स का कैसा है कंपैरेटिवली? इन टर्म्स ऑफ लर्निंग पर्पस और समथिंग एल्स। नहीं, इम्प्लीमेंट मतलब कि फॉर ऑफिस यूज एक्चुअली। ऑफिशियल्स के लिए तो आपको देखिए, दो तरह से ऑप्शन आते हैं एमएस प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा में। इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग बेस पर है, आप कितने यूजर्स के लिए आप उसको ले रहे हैं। कस्टमाइज वे पर आपको देखना होगा कि आपको उसमें, अगर क्लाउड बेस्ड आप ले रहे हो, तो क्लाउड पर कितना स्टोरेज आपको चाहिए। on the ओके। basis of your number of projects की quantity, on the basis of them you can customize your budget। उसके हिसाब से फिर आप दे सकते हो, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है तो क्लाउड में स्टोर होगा। तो वो भी तो ओके। आपको देखना होगा कि कितना स्टोरेज लेना है। ओके। ओके। तो एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। हाँ। सर, हाँ, पूछिए। सर कॉस्टिंग जो ऑफर का। आपकी वॉइस बहुत इको हो रही है। आई वुड अप्रिशिएट अगर आप उसको टाइप करेंगे ना चैट बॉक्स में, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। आपकी वॉइस इको हो रही है। कॉस्टिंग कॉस्टिंग सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग कैन सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग इन टर्म्स ऑफ लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑन योर ऑफिस। इन ऑफिस। ऑफिस, वही तो मैंने इनको पूछा, अभी इन्होंने पूछा था ना कि उसके लिए आपको देखना होगा कि आपको कितने यूजर्स के लिए चाहिए। और उसमें फिर आपको ये चेक करना होगा कि आपका जो क्लाउड पर कितना स्टोरेज आपको चाहिए, बिकॉज सॉफ्टवेयर हाँ जो है हाँ, वो क्लाउड बेस्ड है। तो उसमें ऑनलाइन कितना है ये। स्टोरेज। हाँ, ये ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन नहीं चलता है। आप लर्निंग के पर्पज से, क्योंकि इसमें दो तीन अलग अलग होते हैं, देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ। मैं समझ गया सर, एज अ पावर BI। हाँ, बस वैसे ही है, पर ये इसमें सेव नहीं करना होता अल्टीमेटली कुछ भी। हाँ हाँ।
तो अगर ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये है स्टैंड अलोन सर्वर। तो इसमें ये जो सर्वर है वो सिर्फ मेरे सॉफ्ट ये लैपटॉप के लिए है। आप विदाउट ऑनलाइन, बिना इंटरनेट के भी आप चला सकते हो। बट आप ऐसा, अगर मैं बोलूँ कि इसमें देखिए मैंने जैसे इसको कट किया ना, अगर मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, अब मैं मान लीजिए दोबारा से इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो ओपन करने के लिए आपको ये P6 प्रोफेशनल, और जब आप इसको ओपन करते हो तो यू हैव टू लॉग इन इट, आपको इसमें लॉग इन करना होता है। अब सपोज कीजिए कि आपके लैपटॉप में भी ये इंस्टॉल्ड है, और अगर आपको मैंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया, तो आपको ये मेरा जो जो ये है वो नहीं ओपन होगा, क्योंकि आपका और हमारा क्लाउड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ना। हाँ, आपका और हमारा सेम क्लाउड होगा ना, तो सेम आईडी पासवर्ड से आप जो मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ वो आप एक्सेस कर सकते हो। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाँ, ओके सर। है ना। तो एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, आपको जो कुछ पूछ रहे हैं तो पूछिए। हेलो जी। सर, क्या इसमें बीओक्यू भी हम वो कर सकते हैं इसमें, जैसे हमारी बिल ऑफ क्वांटिटी होते हैं, तो वो बिल डाल ऑफ, सकते हैं हम इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, बिल ऑफ क्वांटिटीज तो आप डाल सकते हो। बिल ऑफ क्वांटिटीज के बेसिस पर ही आपका कॉस्ट कैलकुलेट होगा ना सर। जैसे आप देखिए यहाँ पर, सपोज कीजिए कि हाँ, हमने यहाँ पर ये ले लिया, ये कंक्रीट का फर्स्ट फ्लोर है। अब कंक्रीट के फर्स्ट फ्लोर में कौन कौन से रिसोर्सेज लगे हैं पहले तो ये देखते हैं। कंक्रीट फर्स्ट फ्लोर, इसका हमने देखा रिसोर्स। सो हियर यू कैन सी कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको यहाँ पर लगे हुए हैं, लाइक दिस। अब इन रिसोर्सेज की क्वांटिटी क्या है, तो वो यहाँ पर आप देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ बजटेड यूनिट। बजटेड यूनिट आपको यहाँ पर सेट करनी होती है। जैसे यहाँ आप देखेंगे, बिकॉज मटेरियल में यूनिट चेंज होती है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि सर हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट को आप किस तरह से यूज करना चाहते हो, टन्स में आप यूज करना चाहते हो, नंबर ऑफ बैग आप यूज करना चाहते हो। तो उस केसेस में आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर देखिए ईच बैग हमने एक बैग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है, या फिर आप टन्स में लेना चाह रहे हो, या फिर क्विंटल में आप मटेरियल यूज करना चाह रहे हो उनकी क्वांटिटीज को। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन यूज, क्योंकि आप बताएंगे कि क्या क्वांटिटी होगी और उस क्वांटिटी की पर यूनिट अमाउंट कितना है, पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी विल कम्स एज एन बजटेड यूनिट, और उस बजटेड यूनिट से फिर आपके टोटल बजटेड प्रोजेक्ट कैलकुलेट होगा। यहाँ पर देखिए एक एक थोड़ा और सिंपल इसको करते हैं, क्योंकि अगर आप ये फर्स्ट टाइम पर आप अगर इन टर्म्स को सुन रहे हैं, दोज हु आर हैव जीरो एक्सपीरियंस और लिटिल बिट एक्सपीरियंस, उनके लिए थोड़ा सा टफ इसलिए होगा क्योंकि पहली बार टर्म्स को सुन रहे हैं। बट आप रेगुलर बेसिस पर आ जाएंगे और हम बहुत डिटेल में जाते हैं इसमें, तो आपको इसमें ऐसा इशू नहीं होगा। जैसे मैंने ये एक प्रोजेक्ट ओपन किया, और उस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे यहाँ पर फाउंडेशन वर्क है। फाउंडेशन वर्क में देखिए हमने सीमेंट यूज किया है, और सीमेंट हमने कितना यूज किया है, 100 यूनिट, मीन दैट मीन्स 100 बैग हमने यूज किए हैं। अब 100 बैग हमने यूज किए हैं सीमेंट के, आप देखिए बजट क्या दिखा रहा है आपका 30,000। हमने सिर्फ सीमेंट यूज किया है इसमें, सिर्फ सीमेंट यूज किया है 30,000 है, मतलब एक सीमेंट का बैग कितने का होगा, 300 रुपीज का। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिसोर्सेज में जो हमने क्वांटिटी यहाँ पर ऐड की है, सी these are your resources, and here you can see that the unit price is 300 rupees per bag. So here you need to maintain the unit price, per unit price, and the total quantity of anything which you required.
अगर आप मैन पावर की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स, किसी भी मैन पावर का आप कितना घंटा यूज करने वाले हो, और पर घंटे का आप उसको कितना पे आउट कर रहे हो. So that things you need to enter. On the basis of these two values, your inputs, वो total budgeted cost को calculate करता है, right? So if you want to ask anything, please ask. Those who have joined late, उनसे सी हमने जब स्टार्ट किया था ये सेशन तो हमने सभी से देयर एक्सपीरियंस एंड देयर एरिया इन विच दे आर वर्किंग, तो ये हमने पूछा था. तो जिन्होंने भी नहीं दिया है, यू कैन आंसर इट ऑन द चैट बॉक्स. प्लीज राइट your experience, year of experience, or anyone can say that ki why you want to learn them. Is there any specific requirement to learn these softwares? Because see, planning or the management part is, it is the ultimate goal. How many days you can learn? देखिए, आपको अप्रोक्सीमेटली दो सेक्शन है ना. आप प्राइमावेरा और एमएसपी दोनों लर्न करेंगे तो आपको एटलीस्ट. प्रीतम, वुड यू आंसर इट? प्रीतम, आई देयर? Yes, sir. So Meenal wants to ask how many days we can learn both software, Meenal, or only one specifically? Primavera. Primavera. For 20, yes, for 21 hours. 21 Actually, we can hours. approx, yeah, we can take it approx for 1 month. 1 month में हम 20 आवर्स की जो क्लासेस होती है उसको Hmm. प्लान करते हैं. ऑन दीज 21 आवर्स क्लासेस, each and every point in detail we will learn all the aspects which is required for for planning or for execution, एंड टू एंड. प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन उसको हम डिस्कस करते हैं. द टर्म्स रिक्वायर्ड, द टेक्निक्स विच इज रिक्वायर्ड to execute your project effectively and efficiently. For them, what kind of techniques are required, what kind of the process, the sequence is required, we'll discuss with them in detail and we'll apply them with the help of softwares. रियल टाइम सिनेरियो अप्रोक्सीमेटली. देखिए, ये जो है, जो क्लासेस होगी वो रियल टाइम सिनेरियो में ही होगी. मैंने अभी आपको जो दिखाया है ये प्रोजेक्ट जो है, दैट इज द रियल टाइम सिनेरियो. G+5 देयर प्रोजेक्ट इनिशिएशन है, प्रोजेक्ट का एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन है, सुपर स्ट्रक्चर वर्क है, और लास्ट में हमने हैंड ओवर किया है प्रोजेक्ट को. सो रियल टाइम सिनेरियो ही होगा उसमें. सर की प्रोजेक्ट का एक्चुअल कॉस्ट और क्लाइंट से जो पैसा मिलता है उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? ओके, सही. जो क्लाइंट से जो पैसा आपको मिलता है उसको आपको एक एक टर्म्स होती है विच इज कॉल्ड बजट लॉग, और एक होता है स्पेंडिंग प्लान. तो बजट लॉग और स्पेंडिंग प्लान में आपको सारी एंट्रीज कर दी हैं कि क्लाइंट से आपको जो पैसा मिला है, क्योंकि क्लाइंट से जो आपको पैसा मिलेगा वो वन टाइम में नहीं आता, वो पैसा आता है वन बाय वन, है ना, कुछ टाइम पे. जैसे आप उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना होता है. एक ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट यू कैन हाईलाइट कि आपको कब कब ये डिलीवर, ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरेबल्स आप वो कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं. डिलीवरेबल्स इज बेसिकली द डिलीवर पार्ट, कि आपको कौन कौन सी चीजें जो है इन योर प्रोजेक्ट, व्हाट आर द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट. आप यहाँ पर देखिए, हमने एक एक कॉन्ट्रैक्ट हाईलाइट भी दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे 10% जो है वो एडवांस पेमेंट होगा, 20% जो होगा कंप्लीशन ऑफ फाउंडेशन होगा, 20% होगा कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्चर, 20% होगा कंप्लीशन ऑफ प्लास्टरिंग, 20% होगा कंप्लीशन ऑफ पेंटिंग एंड फिनिशिंग वर्क, और जो लास्ट होगा 10% फाइनल इंस्पेक्शन और हैंडओवर के टाइम. इफ देयर इज एनी डिले ऑफ द प्रोजेक्ट,
तो पेनल्टी आप पर लगेगी, और इफ देयर एनी डिले ऑफ अमाउंट तो पेनल्टी वो जो कंपनी साइड पे लगेगी। तो वो आपको फिर इसमें बाय द हेल्प ऑफ एंट्री आप उसको ट्रैक कर पाते हो कि जो भी पैसा आया है और अभी आपने कितना पैसा एक्चुअल में खर्च कर दिया है, कितना पैसा आपके टोटल बजटेड कॉस्ट का था। वो सारी एंट्रीज जब आप यहाँ पर देखते हो तो वो आप इजीली उसको विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स और पैरामीटर्स आप उसको चेक कर पाते हो। हाउ टू ट्रैक लेट क्योर एंड एस क्योर। लेट क्योर और एस क्योर के लिए आपको डिले एनालिसिस को करना होता है, और एस क्योर नहीं, वो एस कर्व है आई थिंक, मिस्टर वेंकटेश। एस क्योर और एस कर्व। Yes, Karu. एस कर्व। सो दिस at the time of which that time I was in telling about this curve. Were you there? Hello. At the time when I was telling about this representation, were you there in the or you joined late? Yeah, joining late. Okay, okay, that is why you asked me. See, this was this I have explained it, and this is basically the S curve against time and cost. So S curve, you can create your S curve in the software at any point of time. Let's say you are at the 30% of the project and you want to create the S curve. You can create. Let's say you are on 60% of your project and you want to S curve. So you can create your project S curve. And if you want to analyze the delay analysis or delay analysis, you can track with the EVM. EVM is basically earned value management process. With the help of EVM, you can easily find out the cost variance, the schedule variance part. सर ईवीएम से हम लोग एक्चुअल कॉस्ट पता कर सकते हैं? यस, आप एक्चुअल कॉस्ट भी पता कर सकते हो, और आप ये भी पता कर सकते हो कि जैसे आप प्रोजेक्ट में अभी तक जा रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके प्रोजेक्ट में कितना खर्च होगा। How लेट्स to से कि take आपने take for that yes Karu and late Karu. That is needed for that actual time. Which how to do calculate. हाउ टू कैलकुलेट। Yeah, Okay, okay. So let's see this. The late curve or S curve? What do you want? yeah, and two both are. Both. Okay. See, I'm going to show you one S curve. In this S curve, let's see, this is the time and this is my cost. So your total project is totally depend on your time and cost. And we are only interested in cost and time as well. So that is why I'm going to show you this part. So this is showing, it is looking like S. That is why it is called S curve. So that is your planned S curve. And once you have updated some activities or some tasks, after that only you can create your S curve. So let's say कि ये हमारा S curve है जो मैंने यहाँ पर create किया हुआ है like this. So this is your actual S curve, or that was your planned S curve. So now you can see here the time, this is your time, right? This part is time. So this is the late or delay of your project. And you can see here also this part, this portion. This is your cost, over cost. So what will be the over cost? What is the value of that over cost? What is the time of that over cost? Because this is the graphical representation. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आप फाइंड आउट कर पाते हो, और इन ईवीएम ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, द कॉस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, द एस्टिमेटेड कॉस्ट। सर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए एमएसपी प्राइमरी सीखना है मुझे, आप हाईवे प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कराते हैं क्या? हाईवे प्रोजेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं होता है, बट यस
जो टर्म्स है, हम आपको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, उसमें एक हम प्रोजेक्ट पे डिस्कस भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द प्रोसेस आर बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसमें भी करना वही होगा कि आपको यहाँ पर WBS क्रिएट करने होंगे। आफ्टर WBS यू हैव टू मेंटेन दी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के साथ में फिर आपको रिसोर्सेज तैयार करने होंगे, रिसोर्सेज के बाद में आपको रिस्क इश्यूज थ्रेशोल्ड आपको तैयार करने होंगे। The process is same whether you are from IT background, whether you are from mechanical background. The process, the terms, both are all are same, right? So anything want to ask anything? आप कुछ और पूछना चाहते हो? सर सपोज हमारे प्रोजेक्ट का टाइम और कॉस्ट दोनों एक्सीड कर जाए तो हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं क्या प्राइमरी? यस, कर सकते हो आप अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कर सकते हो ना, क्योंकि ये तो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे इनपुट्स आपको देने हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप डाल सकते हो ना। हाँ, अमेंडमेंट्स आप कब नहीं कर सकते हो? जब आपने बोल दिया है कि सर मेरी एक एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई और एंड भी हो गई, तो आप अमेंडमेंट उसमें स्टार्ट और एंड में नहीं कर सकते हो। आपने खुद बोल दिया कि ये कंप्लीट हो गई, आप कैसे अमेंडमेंट आप कर दोगे? लाइक दैट यू कैन नॉट डू दैट। बट यस, अमेंडमेंट चेंजेस तो होंगे उसमें, फिर तो हमें वर्क ऑर्डर में भी करना होगा। यस, अगर अमेंडमेंट्स हैं और प्रोजेक्ट में है तो वो तो सब में होंगे चेंजेस, आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी होंगे फिर तो। और किसी को कुछ पूछना है? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क। Hello. यस। Each activities I have the total unit total amount of cost I have. Each activities is some of the if one concrete is there na, I have the amount for that 20,000 or any other amount is which one I have. But how to add this basics? This is resources. Resources we add for amount or directly we also add the amount. How to add it? No. First of all, you have to maintain the list of the resources. What are the Resources? resources? I have the more than project is there. More than project is like each of the more than different is there. So I need for accurately this is for resources I can to add it na 20,000 20 rupees na resources la it's not for possible for 20,000 20 rupees not for possible. This is for 20,000 okay it's added for that, but balance 20 rupees is remaining is there. How to do that one is added for that one? Got it. Got it. So see, first of all, after adding all the activities, you need to enter the resource name. Let's say कि आपने यहाँ पर एक resource ऐड किया. Let's say you have added one resource in the name of here I'm going to show you. This is the resource name. Please suggest me what kind of resource you want to add. Is common is each of one concrete work what the things of needed steel and cement and a unit of workers. No, so one by one you need to enter, not the concrete thing. Yeah. You need to, let's say कि आपने I want to add steel, right? Okay. We want to add steel. Okay. So what is the unit price of steel? What is the unit price of steel? And first is you need to identify कि you are using steel in terms of tons or in terms of quintal. So first tell me, okay, you want to add the quantity of steel in terms of tons or quintal? Each project you need to add the resources or
So overall the project is separate resources needed, or one resources is okay. How to add? So you can share with them. See, these are the list of resources for all the project. All the project. Okay. List of resource is for common for all project, right? Now you need to tell them कि sir, your steel is, you want to add the cost of steel in tons or in kilo or in quintal. Let's say you want to add the steel price in terms of quintal. So here you don't have any, the unit for quintal. So for that, what you can do, you can add the unit as per your requirement. So here we have added quintal kind of QU, let's say quintal. So this is the quintal. Now delete, close it, and here this is the quintal which I have assigned. Now what is the per quintal rate, unit quintal rate of steel? Let's say 7,000 per quintal. Now I'm going to assign this rate on this activity. Here you can see that the budgeted cost of let's say plinth beam. Here the budgeted cost is 0. That is why I'm going to show you. I'm going to assign that steel into this activity. Because of कि यहाँ पर ये 0 है, तो वो आप easily आप identify कर पाओगे. So I'm going to assign that resource of steel. Now you need to tell कि सर ये जो steel है यहाँ पर how many quintals of steel you require. Let's say you want to add 10 quintal or you want to add only 9 quintal. So on the basis of 9 quintal, the amount is calculated. And that is the total budgeted cost, not the actual cost, because that is the budgeted unit. ये आपने बजट किया था कि सर 9 क्विंटल यूज होगा, बट यहाँ पर दिस इज द एक्चुअल रेगुलर यूनिट कि आपने कहा कि सर 9 क्विंटल हमने प्लान किया था, बट द एक्चुअल वाज 11 क्विंटल. तो आप देखिए यहाँ पर budgeted was 9 quintal, that's why 63,000. The actual was 11 quintal, that is why it is showing you 77,000. So 2 quintal you have used more steel. Yeah. Okay. Got it? Yeah. So this way minutely you can track your project, minutely you can calculate your cost as well. This status location I come to add for that total cost is this is the wrong way, or this is the general after the status is there now. Just go the status. Status of what? Yeah, this is that general after status is there now. That location I can to add for this is what the work. This work I come to add for that direct the value. No, if you want to add the whole some values, then it will, you are going to stuck at any point of time, because you need to enter the unit price also, na unit of the value. That means I want to say that ki what was your planned unit and what was your actual unit. Ki how many quintal you have planned at the time of planning and how many quintal you have added. So how you will answer of this question? If you added the wholesome amount, let's say you have added 60,000 is my budget for steel. You have added like that. So on what ground you can say that ki sir this at the time of planning we have planned 9 quintal and at the time of execution we have used 11 quintal or 11.5 quintal. So you need to maintain your project minutely. That is why you are using software ना. अगर आपको oversum wholesome करना होगा तो you have Excel. In the Excel you can manage your project na on that way which you are saying. But if you want to enter
right? And if you want to use, track minutely of each 1 rupees, you need to track every 1 rupees. So for that, you have that software. In the software, you have options to track your project minutely. Yeah, okay. And another one, this is the activities like calendar. I'm assigned for that calendar. This is the one activities na I can to add it for that weekly 7 days calendar I can to assign. But Now you can add. If okay, you want to but add the calendar of 7 hours, 24 into 7, you can add the calendar of yeah, Monday okay, to Friday. 24 You hours, can add. yeah, daily 24 into 7 days I can to assign for that calendar. After Hmm. that is the that resources added at the time. That Hmm. worker is a different calendar. I'm also assigned. This Yes, is this for also another you can affecting assign. for this. Yes, this option we have in the Primavera on the basis of the calendar, that maybe the one person is working 24 hours, maybe the second person is working only for Monday to Friday 9 to 5 on the Okay. same project. So if their kind of How to rectify that problem? no, you don't need to rectify. You can just inform into the software. You can just insert the values. Here you have that option. See, in general, you can see here in default of each, this is the calendar, right? Yeah, Let's 5 days say calendar you also assigned. Mr. Vijay But has a different calendar. Let's say Vijay is working for Monday to Saturday. This, and let's say this man, which is Raj is working for uh, 5 days. So you can assign the different calendar to the different resources. yeah, okay. I'm already assigned for that activities. Activities I'm Hmm. assigned that calendar for 24 hours into 7 days I'm assigned. But Hmm. resources that worker man I'm assigning for that 12 hours 7 days I'm already assigned. At that time, See, whatever the situation you are going to assign, you can insert into the software. Whatever in your mind in terms of project planning, tracking, everything you can track into the software. Every situation which you may face in the actual scenario, every situation you can enter the software, right? mm, Any situation, if you have in the mind any situation, any criteria, any problem which you are facing in terms of planning or management, you can enter in Primavera software. There are lots of the things which you may not, but you may face into the software or in your physical manner. yeah, okay. So anything apart from that, if you want to ask? So Preetham, are you there? That Primavera is only for civil engineer? No, Primavera is not for only civil engineers, because here you can see this part. You are from construction and engineering field. If you are a manufacturing company, you can use Primavera. If you are IT company, you can use a Primavera, because Primavera is software of project planning or project management, not the construction planning and construction management, right? Primavera is the software of planning and management, not a construction planning and construction management.
So you can, if you are an energy company, if you are a manufacturing company, if you are a product based company, if you are a corporate company, any kind of project, एक 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 बॉटल बनानी है, इट्स अ प्रोजेक्ट. कंपनी मार्केट में उतारना है, इट्स अ प्रोजेक्ट. एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, इट्स अ प्रोजेक्ट. सिमिलरली एक बिल्डिंग तैयार करती है, इज अ प्रोजेक्ट. सिमिलरली एक रोड तैयार करनी है, इज अ प्रोजेक्ट. Anything which has some budget, which has some duration, which has some resources is the project. So for execution of your project, for managing your project, you need some software, because in your project there are ample of activities. If you have a number of activities, number of resources, and if you are not able to maintain them with the, Excel, so that is why software is there for you. Right, Mr. Yogesh? Yeah, one good schedule make which detail will be needed, which details and one good schedule we also prepare. Each and everything, each and everything, all the details which you have in the project, used it. What things will be needed? This is one any other part of the work, one any other manufacturing. Everything, activities, durations, resources, documentation, test report, number of resources, number of units, everything. Let's say I wanted to say you कि you need to create one G+2 a house, a small house of the area of, let's say, 30 feet by 40 feet. 30 by 40 ka you have a plot, and you need to calculate the total cost of your projects. So what thing you required to calculate the total cost? Everything. Single plaster, the every part of the building, because you need to calculate the total cost of the project. So total cost of the project, you need to add everything which is required. Yeah, okay. So Primavera, see, Mr. Yogesh, Primavera और MSP में डिफरेंस ये है कि MSP जो है उसमें आपको थोड़ा सा ईज मिलता है in terms of scheduling, but in Primavera आपको management wise you have lots of option, and if you are looking for the learning purpose, so Primavera is good. क्योंकि यहाँ पर आपको ना क्या क्या आपको देखने को मिलेगा. You can use resources, also you can use roles. क्योंकि आप MS project में you cannot use roles are basically the responsibilities, roles and responsibilities of your resources. The OBS, the organizational breakdown structure, ये आप ऐड नहीं कर सकते हो. Cost account, the cost account is basically the cost head of your project. This you can add. Resource curve, you have a separate zone for risk issues and threshold. So these things you can add. Is there anything wants to ask anyone? Preetham, are you there? Yes, sir. Hello, am I audible? Yes, you are audible. Yes, sir. So over to you. So everything is over. Anyone having any doubts? Hello, any Meenal wants to ask the cost of the course. cost of the course Hmm. is for the combo or for the means single course? Single course. 5999. Okay. Yeah. Any more questions?
Hello. Any more questions? It's clear, like it's quite clear actually. So So, Pritam, I'm leaving. Over to you. okay. Okay. Shall I So leave? I Shall hope, I leave? yeah, yes, sir. I hope everyone has been clear. Anyone have no one have any doubt. So we are good to close the session. Yeah. Okay, Thank you. thank you everyone. See Yeah, you in thank you. the session. Good night. Good night. Good night, sir.